we'll discuss principles of supervision in nursing. So starting with the first principle, supervision time should be planned, protected and uninterrupted. Next is sessions should be held in private or should be entirely confidential. Next is supervision time should be taken while on duty, but at a time that is convenient to other staff on duty and to service users. Next is there should be agreement between supervisor and supervisee about how they will conduct their supervision session. Next is each supervisor should not have more than 3 staff under supervision at any one time. So just principle is supervisor need to have clinical expertise, excellent interpersonal skills and facilitative attitude to others. Then new supervisor will be selected by the management. Then all care staff should have a nominated supervisor whose name should be entered in their personal development file. Staff should be given a say as to who their supervisor will be. All care and nursing staff should have at least one formal supervision session of at least 1 hour duration every 2 months. Next is the staff and supervisors will have training in the process of supervision. And the last principle is the process of clinical supervision should always be practitioner-led and practice-focused. These are the principles of supervision in nursing. Now we'll see the styles of supervision. फर्स्ट इज अथॉरिटेरियन सुपरविजन. जो अथॉरिटेरियन बार बार इस टर्म को यूज कर भी चुके हैं हमने मेथड्स ऑफ सुपरविजन में भी इसके सेकंड पॉइंट में कोऑपरेटिव के साथ इसको डिस्कस किया था. तो अथॉरिटेरियन में क्या है, अथॉरिटेरियन स्टाइल इज बेस्ड ऑन बिलीव दैट जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जिनको जो सुपरवाइजी हैं, जिनको सुपरवाइज करना है, उनके लिए कॉन्टिन्यूस अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप उन्हें बार बार ऑब्जर्व करते रहें, क्लोज ऑब्जर्वेशन करते रहें ताकि उनकी स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सको, उनकी जो भी शॉर्ट कमिंग है उनको फाइंड आउट कर सको. Next is laissez-faire. Laissez-faire supervision is based on desire to allow members the freedom to use their talents and skills in accomplishing job. Next style is companionable. It is based principally on friendship-like relationship. Next is synergistic supervision. Synergistic supervision क्या है, cooperative effort between supervision and the members. इसमें क्या है, mainly it allows the effect of the joint effort to be greater than the sum of their individual contribution. तो इसमें क्या मिलजुल के काम करना, उस चीज पे फोकस किया जाता है. सुपरविजन का इसमें डुअल फोकस होता है. एक तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकम्प्लिश करना और दूसरा है जो प्रोफेशनल और पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स है किसी भी स्टाफ के, उनको सपोर्ट करना. Next we'll see techniques or tools of supervision. So there are few techniques like observation, supervisory rounds, individual or group conferences. Next is checklist. Next is rating scale, written policies or printed manuals and bulletin boards. Reports written or verbal. Next आता है आपका records including anecdotal records. Then follow-up visits and evaluation. Then staff meeting and service education आप करवा सकते हैं. Next we'll see methods of supervision in hospital. Methods of supervision हम especially अब बात करेंगे hospital की. So direct method आपको पता ही है, it is based on observation on the spot. आप जाके सीधा observe करते हो, that is direct method. Indirect आपका क्या है, based on perusal of reports, records maintained by staff, individual conferences or talks, staff meetings or performance during some training session. इसमें आपके examples आते हैं patients records and reports, patient history sheets, then treatment records, result of investigations and diagnostic procedures. सुपरविजन के लिए हम और भी रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग का यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल जनरल ऑर्डर बुक हो गई, राउंड बुक राउंड हो रहा है, नर्सिंग राउंड हो रहा है या डॉक्टर्स राउंड हो रहा है, उसके लिए तो अगर नर्सिंग पर्सनल्स हैं तो हम नर्सिंग राउंड बुक मेंटेन करते हैं. प्रोसीजर मैनुअल होना चाहिए हमारे पास कि किस तरीके से आप मेडिसिन यूज करते हैं, मेडिसिन नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग नोट्स हमारे पास होते हैं. देन एडमिशन डिस्चार्ज रजिस्टर मेंटेन करते हैं, डेथ रजिस्टर मेंटेन करते हैं, क्या क्या चीजें ऑर्डर करनी है, इंडेंट रिक्विजिशन रजिस्टर, ड्रग्स एंड सप्लाईज के लिए मेंटेन करते हैं. देन अदर रिकॉर्ड्स इन स्पेशल सेंटर्स, तो अलग अलग वार्ड के अकॉर्डिंग अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं. होल प्रोसेस ऑफ सुपरविजन इज डन बाय अ सुपरवाइजर. सो देयर आर few qualities that a good supervisor must have. First is thoroughness. Supervisor must have detailed knowledge of information relevant to the task. Next, tactfulness. Tactfulness is nothing but saying or doing things in a way which gives the subordinates a feeling of playing an important part in whatever is being done. Next is fairness. Fairness means a supervisor must have a sense of justice. Next is initiative.
Initiative includes quality of courage, self-confidence, decisiveness. A supervisor must have these qualities also. Next is emotional control. It means emotional maturity. Next is personal qualification. So personal qualification include integrity, honesty, ability to cooperate, ability to attract, motivated होना चाहिए, unite others to work, जो supervisor है सबको साथ में मिलके काम करे. Next is teaching ability. Teaching ability is nothing but ability to communicate with the workers. किस तरीके से communicate करना है, किस तरीके से उनको educate करना है, किस तरीके से उनको guide करना है, that is under teaching ability. Next is enthusiasm. Then general outlook. Supervisor should show liking of the job. So these are the qualities of a good supervisor. So here we have completed the topic supervision. Thank you.